as far as section 434 is concerned of transfer of certain proceedings to NCLT, then I can say that before NCLT was constituted on 1st June 2016, there was CLT, there was BIFA, and High Court या District Court were having jurisdictions for company law matters. So as far as those matters which are pending with CLT shall be transferred to NCLT. Those methods regarding revival which are pending with BIFA, उनका क्या होगा? Then shall abate and reinitiate within 180 days with NCLT. यानी वो तब वो स्थगित हो जाएगी एंड बाद में NCLT उसे 180 दिन में रीइनिशिएट करेगी। एंड हाईकोर्ट के पास जो एमएनडी का मैटर हो, कोई जब स्कीम के अप्रूवल की बात चलेगा, मीटिंग के अप्रूवल की, या फिर वाइंडिंग अप का कोई मैटर पेंडिंग है, तो वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? NCLT। सो CLT के पेंडिंग मैटर्स NCLT को, हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर्स NCLT को, बाइफर ने कोई अगर मैटर शुरू कर दिया हो तो वो तब स्थगित हो जाएगा एंड 180 डेज में NCLT को ट्रांसफर हो जाएगा। एंड अगर बाइफर ने कोई मैटर शुरू ही ना किया हो तो अब वो कौन शुरुआत करेगा? NCLT। बिकॉज वी नो CLT demolished, BIFA gone, this powers taken by what? NCLT. This is the reason why this matter came into picture. And the last thing they say, NCLT बना उसके पहले अगर किसी ने CLT ऑर्डर पास किया and पार्टी अगर इससे अग्री तो फिर अपील टू हाई कोर्ट, तो फिर इसकी अपील एपेलेट ट्रिब्यूनल को नहीं जाएगी, इसकी अपील किसको जाएगी? हाई कोर्ट। एंड वो भी कितने दिन में? 60 डेज में। एंड चाहे तो एक्सटेंशन आ सकता है और सो अगर CLT ने ऑलरेडी पहले से ऑर्डर पास कर दिया और उसके खिलाफ अगर पार्टी एग्रीड और अपील में जाना चाहते हैं तो हाईकोर्ट को 60 डेज में एंड हाईकोर्ट चाहे तो और 60 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है। दिस इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग्स गोज ऑन एंड दिस इज हाउ इट इज मेड। नाउ फ्रेंड्स, let us discuss the concept of compounding of offense. Compounding is like a leniency approach of law towards an assessor. Compounding के दो अलग-अलग पहलू हैं। अगर imprisonment हो, उसकी जगह पे लीव ऑफ इंस्टेड ऑफ अगर फाइन दे दी जाए IF इंस्टेड ऑफ I, यानी फाइन इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो इसे भी कहते हैं कंपाउंडिंग। एंड दूसरा अप्रोच है रिडक्शन ऑफ फाइन, इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एक लीनियंट अप्रोच है जिसमें इम्प्रिजनमेंट की जगह पे फाइन लगाया जा सकता है या तो फाइन रिड्यूस भी किया जा सकता है। अब खास करके ध्यान ये रखना है कि कब कब इस प्रकार से कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानकर हमने देखा है कई बार 4 अलग-अलग प्रकार के पेनल्टी प्रोविजन आते हैं। कोई जगह पे ऐसा लिखा होता है इम्प्रिजनमेंट ऑनली, कोई जगह पे ऐसा लिखा होता है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, कई जगह पे ऐसा लिखा होता है फाइन ऑनली, कई जगह पे लिखा होता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। तो आप एक चीज यहां पे समझ सकते हो कि ये दो जगह पे इम्प्रिजनमेंट कंपल्सरी एंड ये दो जगह पे
इम्प्रिजनमेंट ऑप्शनल है या फिर नो इम्प्रिजनमेंट, यानी यहां पे तो इम्प्रिजनमेंट है ही और यहां पे है तो इम्प्रिजनमेंट ऑप्शनल है, एंड दैट्स व्हाई नो कंपाउंड। चाहे इम्प्रिजनमेंट कंपल्सरी हो, वो गुनाह जनरली क्रिमिनल इन नेचर होता है, क्रिमिनल गुनाहों को कभी कंपाउंड किया जाता नहीं, तो वहां पे कंपाउंडिंग इज नॉट पॉसिबल, बट यस हियर कंपाउंडिंग इज पॉसिबल, बट इंपॉर्टेंट with permission of special code। हम इसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल कोड, बट विद द परमिशन ऑफ विच कोड, स्पेशल। अब कंपाउंडिंग जो है उसके लिए अप्लाई करने का एक सही समय है, वो कौन सा? बिफोर और ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन, यानी कानूनी कार्यवाही शुरू होगी उसके पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो, कानूनी कार्यवाही चल रही हो तभी भी आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन अप्लाई करेगा? तो या तो कंपनी या तो ऑफिसर डिफॉल्ट। किसको अप्लाई करोगे? आरओसी। फिर आरओसी क्या करेगा? ऑफेंस, पेनल्टी अप टू रुपीज 5 लाख, यस नो। अगर 5 लाख तक हो तो रेफर टू आरटी, वो रीजनल डायरेक्टर को रेफर करेगा, एंड अगर 5 लाख से ज्यादा हो तो रेफर टू ट्रिब्यूनल। एंड रिमेंबर, व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ रेफरेंस इज मेड along with its own, यानी पहले एप्लीकेशन जाएगा आरओसी को, आरओसी खुद एनालाइज करेगा, अपनी कमेंट्स देगा, साथ साथ 5 लाख तक का मामला होगा तो आरटी को देगा, 5 लाख से ज्यादा होगा तो वो ट्रिब्यूनल को देगा। प्लस एक चीज का ध्यान रखना कि डिस्क्रिशन इज ऑफ आरटी या ट्रिब्यूनल, मींस कंपाउंडिंग आपका अधिकार नहीं है। कंपाउंडिंग देना कि कंपाउंडिंग ना देना वो रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। प्लस भले कंपाउंडिंग दे दिया जाए, आपसे जो गलती हुई है उससे आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जैसे एनुअल रिटर्न नहीं भरा था और 10 साल की पेनल्टी आ रही थी, तो 10 साल के एनुअल रिटर्न भरने तो पड़ेगा। हाँ, पेनल्टी में से रिलैक्सेशन, आपको गुनाह किया उसकी पेनल्टी में से रिलैक्सेशन मिला, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में से रिएक्शन बेनिफिट मिला, पर आपको उस एक्शंस को बिल्कुल तो करना, यानी कि आपने एक्शंस नहीं की उससे आने वाले रिएक्शन अर्थात पेनल्टी में रिडक्शन होगा, बाकी आपको एक्शन तो करनी पड़ेगी। कंपाउंडिंग का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको एक्शन करने की आवश्यकता नहीं। सो दोज एक्शन व्हिच आर नॉट डन शैल बी डन, बट द पेनल्टी व्हिच वाज लेविड बिकॉज़ ऑफ नॉन एक्शन विल बी रिड्यूस्ड। ये खास आपको ध्यान रखना है। प्लस जैसे आपको कंपाउंडिंग मिल जाता है, कंपनी को आरओसी को बता देना होगा 7 दिन के, एंड असर क्या होगा? अगर आपने बिफोर प्रोसिक्यूशन अप्लाई किया होगा तो नो प्रोसिक्यूशन, एंड ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन अप्लाई किया होगा तो प्रोसिक्यूशन शैल अवेट, पार्टीज विल बी डिस्चार्ज्ड। एंड द लास्ट थिंग, कब कंपाउंडिंग नहीं हो सकता? नो कंपाउंडिंग पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर रिपीटेड ऑफेंस इन 3 years।
रिपीटेड ऑफेंस इन 3 इयर्स का मतलब क्या होता है? तो देखो पहले तो अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, छानबीन चल रही हो, तो कंपाउंडिंग अवेलेबल नहीं होगा, वो तो ओके ही रहेगा। एंड अगर आपने एक का एक गुना जिसको पहले आपने कंपाउंड करवाया वही गुना आपने 3 साल में रिपीट किया, 3 साल, तो फिर दूसरे गुना के लिए कंपाउंडिंग मिलेगा। तो आप सोचेंगे सर अगर कोई गुना 3 साल के बाद करें तो क्या कंपाउंडिंग मिलेगा? द आंसर इज यस। जैसे गजनी पता है 15 मिनट में चीजें भूल जाता है, वैसे लॉबी 3 साल के बाद वो गुनाह को भूल जाता है। 3 साल के बाद किया गया रिपीटेड ऑफेंस, फ्रेंड्स नोट करना, 3 साल के बाद किया गया रिपीटेड ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा एज अ फ्रेश ऑफेंस, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ फ्रेश ऑफेंस कंपाउंडिंग विल बी। तो अगर हम थोड़ा फास्ट रिकैप करें तो कंपाउंडिंग का एक मतलब ये होता है कि इम्प्रिजनमेंट की जगह पे फाइन लगाना, दूसरा खाली फाइन है तो फाइन को क्या करना, रिड्यूस करना। सो एक रिडक्शन की बात है, एक ल्यू ऑफ की बात है, यानी कि इंस्टेड ऑफ। कंपाउंडिंग तभी अवेलेबल होता है जब इम्प्रिजनमेंट हो ही नहीं या इम्प्रिजनमेंट ऑप्शन हो। बाकी इम्प्रिजनमेंट जहां कंपलसरी हो वहां कंपाउंडिंग अवेलेबल नहीं होता। जब भी कंपाउंडिंग अवेलेबल होता है फिर भी आपको स्पेशल कोर्ट की परमिशन तो लेनी होती है। कंपनी या ऑफिसर प्रोसिक्यूशन शुरू होने से पहले या प्रोसिक्यूशन के दरमियान आरओसी को अप्लाई करेगा। आरओसी देखेगा कि ऑफेंस के अंदर की पेनल्टी 5 लाख तक हो तो आरडी को रेफर करेगा, 5 लाख से ज्यादा हो तो ट्रिब्यूनल को रेफर करेगा अलॉन्ग विद इट्स ओन कमेंट्स। प्लस डिस्क्रिशन हमेशा अथॉरिटी का रहेगा कि कंपाउंडिंग दे कि कंपाउंडिंग ना दे। कंपाउंडिंग हमारा अधिकार नहीं है, वो चीज का खास ध्यान रहना चाहिए। प्लस अगर कंपाउंडिंग दिया कार्यवाही के पहले, कार्यवाही होगी नहीं, अगर कार्यवाही चल रही होगी तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज। एंड जब भी इस प्रकार से कंपाउंडिंग दिया जाता है तो कंपाउंडिंग मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इंटीमेट करना है। So now see friends, now we are going to discuss the provisions of special court. Provisions of special court in nutshell will be like, special courts are created. Special courts does not mean a new type of courts to be constituted, but for a specific purpose, for emergency situation or for a speedy trial of a particular offence. High Court may designate a certain judge a place, then that will become a special court. So if we focus, then first of all, how special courts are formed? Then you can say special courts are formed by central government itself. Again by way of what? Notification. That is notification by way of official gazette in established special court. कितनी स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं? गवर्नमेंट चाहे उतनी। खास इसका पर्पस क्या होता है? तो द पर्पस इज स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर होने वाले ऑफेंसेस का अगर स्पीडी ट्रायल करना हो तो कई बार हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उस मैटर को स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकता है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशल कोर्ट सिर्फ इसी एक्ट के ट्रायल्स को हैंडल कर सकते हैं। स्पेशल कोर्ट जब कंपनीज एक्ट के ट्रायल को हैंडल कर रहा हो एंड एक्यूज्ड अगर दूसरे कोई ऑफेंस में गुनहगार हो, यानी कि दूसरा कोई ऑफेंस चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो, तो दोनों को साथ साथ भी हैंडल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई स्पेशल कोर्ट डज नॉट हैव अ सिंगल ट्रायल पावर बट आल्सो हैज अ जॉइंट ट्रायल। प्लस इस एक्ट के अंदर जो भी गुनाह होते हैं उस सबको कौन ट्रायल में ले सकता है? तो वो स्पेशल कोर्ट जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन होता है कंपनी के रजिस्टर ऑफिस के एरिया के ऊपर। एंड इफ नॉट देन हाई कोर्ट में स्पेसिफाई अ स्पेशल, यानी हमारी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस जहां पे लोकेटेड है उस एरिया के लिए अगर कोई स्पेशल कोर्ट ना हो तो in that situation high court will designate a particular court as a special court. Plus कौन जज बन सकता है? Who can be a judge at a special court? तो जो सेशंस जज होगा, और अगर सेशंस जज अवेलेबल ना हो तो इंक्लूडिंग एडिशनल सेशंस जज वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है एज अ जज, पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की परमिशन कॉन्फ्रेंस लेके ये करना चाहिए। प्लस आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूरा एप्लीकेबल होगा,
बिकॉज स्पेशल कोर्ट को सेम पोजीशन दिया गया है एज इट इज ऑफ अ सेशंस कोर्ट एंड जो नॉर्मली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो राइट्स अवेलेबल होते हैं वो सारे अधिकार यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाए। प्लस कोई भी मैटर जब भी मैजिस्ट्रेट के पास आता है, यदि किसी भी एक्यूज्ड इंसान को जब मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है तो मैजिस्ट्रेट सोचेगा कि क्या उसको डिटेन करने की जरूरत है। अगर उसे डिटेन करने की जरूरत नहीं तो उसे सीधा स्पेशल कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। पर हाँ, अगर उसे डिटेन करने की जरूरत हो तो जो मैजिस्ट्रेट है वो अगर रूटीन मैजिस्ट्रेट हो तो वो 15 दिन तक किसी को डिटेन कर सकता है एंड वो टेम्पररी पर्पस के लिए यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो तो वो मैक्सिमम 7 दिन के लिए डिटेन कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्पेशल ऐसा तो स्पेशल कोर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जो हम जनरली अलाइड लॉस के अंदर डिस्कस भी करते हैं कि हाउ द स्पेशल कोर्ट एक्चुअली ऑपरेट्स, पर ये थोड़ा सा सिमिलर है उससे, पर ये थोड़ा सा जो अमेंडेड प्रोविजंस थे जो ट्रिब्यूनल के आने से पहले वो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई करने का एक छोटा सा प्रयास किया। तो काइंडली आप इन्हें खास नोट कर लें एज फार एज द स्पेशल कोर्ट प्रोविजंस आर कंसर्न्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। Yes friends, hi. Welcome to the amendment lectures organized by Navkar Institute, Ahmedabad. Moving further towards again one new chapter. As such, you can say not a new chapter, this chapter was earlier also there. But till the constitution of NCLT, means till the NCLT was not constituted, the provisions of operation mismanagement were applicable of Companies Act 1956. But when on 1st June 2016, the NCLT and NCLAT Tribunal and Appellate Tribunal got constituted, the new provisions of Companies Act 2013 became applicable. So first of all, I would like to say that now, as far as CA final May 2017 onwards and CS executive and CS professional June 2017 onwards Companies Act 2013 will be applicable. Moreover, in Companies Act 2013, Chapter 16 will be applicable, which covers in it Section 241 to 246, which deals regarding the operation and mismanagement. So chapter 16, 241 to 246. Just remember 16, 1, 6. Right, that's how you can remember. All these are the sections to be covered. Now friends, how we are going to discuss this particular chapter? So I have break or decompose this chapter into 3 parts. The very first part we will discuss on the landmark judgment of Foss versus Harbottle. From that we will derive its various exceptions, and one of the exceptions in that particular case law is regarding prevention of operation and mismanagement. The second we will discuss logic of operation and mismanagement. यानी what is operation, what is not in operation, what is mismanagement, what is not in mismanagement, उस सब के ऊपर हम ध्यान देंगे. प्लस उसके बाद what can happen, right? तो whenever this kind of operation या mismanagement is found, the aggrieved person can apply to tribunal. So how the aggrieved person can apply to tribunal?
And if tribunal feels that yes, something wrong is going on, so in that situation, what actions can be taken by the tribunal and whether the actions taken by the tribunal will have any kind of reaction on the operation in this management, that all things we need to discuss. As far as these two things are concerned, they are still the same as far as Companies Act 1956 was there. But yes, now there is a major change in this particular portion, because this is legal portion, whereas this is logical portion. So friends, this video will be very helpful to you to understand the provisions of the new Companies Act. So kindly note down this. Friends, now moving towards the very first part, as I told you, we are going to discuss this within the 4 different parts. The very first is the landmark judgment of, you can say, Foss versus Harbottle. Now in order to discuss this, we can say that generally in a company law it has been seen that majority rules. The cardinal law of company law says that whatever to what majority agrees, the minority has to understand, the minority has to abide by, the minority has to suffer. So that's why I wrote here majority powers. But yeah, whenever something wrong is going on, do minority gets any right? That is to be seen in the one of the landmark judgment, Foss versus Harbottle. Friends, what happened basically in a nutshell in Foss versus Harbottle? The directors of the company were trying to apply the assets for their personal gain. We're trying to alienate the assets of the company. We're trying to use the property of the company in a manner which was detrimental to the interest of the company. And therefore, 2 shareholders of the company initiated an action, a prosecution against a company. Later on, the court denied the matter. The court dismissed the matter, and 2 things came out of that. The one was the rule of non-interference. Court told that as it's an internal matter, it's a matter of internal consideration, doctrine of indoor management. Court is not here to interfere in that. So court adopted non-interference. And court also brought one thing, that will of majority shall prevail. What were the reasons behind this kind of judgment or viewpoint of the court? Then it was also pretty simple that they were trying to give recognition to majority. वो चाहते थे मेजॉरिटी जो डिसाइड करे वो सही, प्लस उनके मुताबिक एक प्रॉपर प्लेंटिफ शेयर होल्डर नहीं होता, पर एक प्रॉपर प्लेंटिफ कंपनी होती है। बिकॉज अगर हम शेयर होल्डर एक मेंबर को अगर अधिकार देने लगे तो देयर विल बी सो मेनी सूट्स अगेंस्ट द कंपनी. सो दे थॉट that multiplicity of suits shall be ignored and unproductive litigations भी होने लगे. ये सबके सामने उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, and that's the reason they came out with a rule of non-interference, with a rule of majority to prevail, and that's what the case of Foss versus Harbottle is. On one hand, we agree that yes, the decisions which came out and the reasons are justifiable. But friends, in a case of a company, I also believe that every time what the majority does is not always right. Many times what a minority thinks may be right. And we cannot always say that the majority always thinks in the interest of company and minority might be acting as detrimental to the company. And that's because, to support my viewpoint, there are various exceptions, not only in the Companies Act, but also as far as the judicial case laws, where the law, the court of law, respected judges ignored what majority did and gave importance to minority supersedes. Let us see, there are various exceptions available in the case laws. As far as whenever the Ultra Vires Act is found, even a single member can bring an injunction to the act done by the majority. This we saw when we had a discussion on the judgment of
Ashbury Railway, Iron and Carriage Company Limited versus Recheck. That if directors are trying to do something which is beyond the object clause, which is ultra virus, then it should be stopped. In case the company is doing illegal acts, again the theme, or you can say in case of fraud what's on minority. Here what happened in this particular judgment, there were two companies. Both the companies entered into a compromise, a kind of a arrangement, in which the shareholders of, the majority shareholders of one company were also the majority shareholders of another company. And they tried to do an agreement which was detrimental to one and beneficial to another company. Now, as this agreement was detrimental to one of the companies, the minority shareholders of that company brought a suit against that majority shareholders or directors, and they succeeded because that directors were trying to do a fraud on minority. या फिर सोचो कंपनी के कंट्रोल में, कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के सुपरविजन में, कंपनी के सुपरिटेंडेंस में अगर रॉन्ग डूअर्स खुद आ जाए, कन्विक्टेड लोग खुद आ जाए, तो जब कंट्रोल ही गलत हो तो कंपनी हमेशा गलत दिशा में जाएगी. तो अगेन इन दिस सिचुएशन माइनॉरिटी प्रिवेल्स. वन मोर, जब डायरेक्टर्स उनको जो दायित्व दिया गया है फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम करने का, एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट में काम करने का, वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करे, हमें कोई मतलब नहीं है, बट फेयर डिस्क्लोजर रखे, कंपनी को डिट्रीमेंटल ना हो, वो ध्यान रखे. तो एक बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी थी जिसके अंदर एक हस्बैंड था, एक वाइफ था, वही दोनों डायरेक्टर थे, वही दोनों मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे. कंपनी ने उसकी एक प्रॉपर्टी, एक लैंड एक डायरेक्टर के नाम पे बेच दी, एंड दैट टू एट अ ग्रॉस अंडर वैल्यू. Then again in this situation it was being held that whenever the directors are trying to do a breach of their fiduciary capacity, the majority rule will not prevail. अगर हम कोई भी तरीके से मेंबर्स के अधिकार को इन्फ्रिंज करने का प्रयास करते हैं, वायोलेट करने का प्रयास करते हैं, उन्हें डिप्राइव करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम किसी मेंबर को लगातार जानबूझ के नोटिसेस नहीं भेज रहे, बोनस नहीं दे रहे, दैट सिचुएशन माइनॉरिटी प्रिवेल्स. एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ special resolution. You can always say special resolution, majority means 51%, and in certain situations we require 75% assent, and that is special resolution. So friends, all these are the scenarios which are prevailing in the various judgments and case laws which are an exception to a majority rule. Here even a minority can go against majority. And this is not so that only the judicial pronouncements या case laws have shown. We have also seen the same in various provisions of the Companies Act. जैसे कि if we say section 48 which deals regarding variation of shareholders right. When the shareholders right are variated and if descending shareholders greater than or equal to 10%, then they may go to court, and if they apply to court in the right point of time, then until the court gives the judgment, the variation will not be effective. We can also see section 235, in which if a transferee company acquires 90% of shareholding, then it gets a power of compulsory acquisition. But if that 10% or less minority shareholders, if bring a suit against a transferee company, they can restrain transferee company from compulsory acquisition from minority shareholders. Also there is section 97 in which if company is making a default in calling an AGM, then a member can apply to tribunal to call an AGM. In case of company defaults. Same in case of company defaults in EGM, again a member can apply. Requisite members in demand pool. If the company is with share capital, then a member or member present in person or proxy holding minimum 10% of share capital or having that much share capital on which rupees 5 lakh is spent. तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं? पोल डिमांड कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये प्रोविजन ऑफ पोल, members right to call EGM in case of takeover, in case of variation of shareholders right,
all these are the well set examples, few of the examples where companies have also tried to give importance to minority shareholders. And from this, one untouched by me is application to tribunal. In case of ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट, यानी अगर ऐसा हो रहा है कि कंपनी ऑपरेशन स्टेप्स ले रही है माइनॉरिटी के ऊपर या कंपनी के अंदर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन आल्सो सर्टेन एलिजिबल मेंबर्स अंडर सेक्शन 241 to 244 कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल एंड कैन सेव द कंपनी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दिस ऑपरेसिव पर्सन्स. So these are few of the examples, and yes, now we need to focus on the main concept, that is operation and. So friends, in the very first part we discussed the landmark judgment of Foss versus Navkar and few exceptions, from which few were some case law exceptions and the few were the exceptions in the Companies Act itself. And when we were discussing the exceptions of the company law itself, one of the exception was operation and mismanagement. And now logically to discuss what is operation, what is mismanagement. Friends, here I am discussing or I am presenting one presentation before you where I have broadly tried to generalize the concept of operation and mismanagement. But frankly, let me give a disclaimer that this is not a limited discussion. The examples taken here are not exhaustive, but they are purely illustrative. Why I am saying so? Because whether there is an operation or mismanagement is a subjective issue, because we don't have any kind of objective definition available in the Act. No definition. Therefore, we need to consider in a broad, generic sense, not in a limited restrictive sense. यानी हम जब इसे समझने जा रहे हैं तो हमें उसे ब्रॉड तरीके से देखना होगा, उसे लिमिटेड तरीके से नहीं देखना होगा, right? And we need to apply in a general form, not in a restrictive. For example, let us first take you to the concept of operation. Operations means जब भी किसी के भी द्वारा ऐसी कोई भी क्रिया की जाए जो किसी के ऊपर हार्श हो या वो सामने वाले के ऊपर एक बर्डन के तौर पे, और हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बार की गई क्रिया को हमेशा ऑपरेसिव नहीं मान सकते. Means there should be a series of operative. We should need to prove that yes, there's a missing portion of probability. There is a missing portion of fair dealing. Everything what is done is unfair, and if it is going to continue, then there might be situation that the company may go into a sick position. If still continue, the company may go into white. So when this principle should be kept in mind, and on the basis of that, various situations I have tried to cover into two parts, on which many times practicals are also asked. That what is operation? मीन्स यहाँ पे कुछ सिचुएशंस देखने जा रहे हैं जिसे हम ऑपरेशन कह सकते हैं. जैसे कि एक कंपनी थी जिसके अंदर दो शेयर होल्डिंग ग्रुप थे, फिर उस कंपनी के अंदर इस तरीके से फर्दर शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया जिसके अंदर मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई, या माइनॉरिटी थी वो मेजॉरिटी में. एंड वो भी खास ध्यान रखने लायक चीज क्या थी, जब ऐसा अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स किया गया तब कंपनी को फंड्स की कोई जरूरत नहीं. सो आप बेशक कह सकते हो कि ये अलॉटमेंट के पीछे का उद्देश्य ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल खेलने का था. एंड जब कंपनी को इस गलत चीज का जब जरिया बनाया जाता है तो बेशक उसे ऑपरेशन ही कहा जाता है. या फिर आप कह सकते हो फैमिली कंपनीज. ये फैमिली कंपनीज बनाई इस तरीके से जाती है और चलाई भी जबरदस्त तरीके से जाती है. मेरे लैंग्वेज में तो इन्हें क्वासी पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. जब बेनिफिट्स लेने की बारी आती है तो वो लोग उसे कंपनी का नाम देते हैं, पर जब उसमें से फायदा लेने, जब उसे मैनेजमेंट करने की बात आती है तो उसे कोई एंगल से कंपनी की तरह नहीं चलाया जाता, उसे बेशक एक पार्टनरशिप फर्म की तरह चलाया जाता है.
कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स तो काफी होते हैं, पूरी टीम होती है, कहने के लिए ऐसा कहा भी जाता है कि एवरी डिसीजन इज टेकन बाय अ टीम। अगर आप जाके देखो फ्रेंड्स, उस टीम में दो प्रकार के डायरेक्टर होते हैं, एक डायरेक्टर हु डायरेक्ट एंड द अदर आर द डायरेक्टर हु एक्ट। अदर आर द डायरेक्टर्स हु एक्ट मींस वो डायरेक्टर के नाम पे एक बहुत बड़े एक्टर होते हैं। ऐसी भी कुछ कंपनीज होती है, फैमिली ग्रुप कंपनीज, उसके अंदर आइए देखते हैं किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सामने वाले ग्रुप के डायरेक्टर को अचानक से कोई रीजन के बिना रिमूव कर देना, ये और कुछ नहीं ऑपरेशन है। या कई बार सामने वाले ग्रुप के डायरेक्टर्स जो है उनके अधिकार को, उनकी अथॉरिटी को मार्जिनलाइज करना हो, रिमूव करना हो, रिड्यूस करना हो, कोई बात नहीं, आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करें। या कंपनी के अंदर अननेसेसरी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करना, जिससे कंपनी के बने बनाए बैलेंस जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अपसेट करना, ये सारी चीजें, या फिर यू कैन से इंक्रीज इन शेयर कैपिटल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द वोटिंग रेट, नो नीड ऑफ फंड्स। Then friends, in all the situations you can say that there is operation. Yes friends, I also noted down certain points where you can say, though we think that this is oppressive, but it is actually not an operation. Means there are certain situations जो operation नहीं है। Which is not an operation. जैसे कि कंपनी ने राइट इश्यू लाया, कंपनी के अंदर दो प्रकार के शेयर होल्डर्स थे, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, पर कंपनी ने फॉरेन शेयर होल्डर्स को राइट इश्यू में शेयर चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डर्स को ऐसा लगा कि वो माइनॉरिटी में है इसलिए अधिकार नहीं दिया, बट एक्चुअली हमारे इंडिया में देयर इज फेरा जिसको कंप्लाई करने के लिए हमने उन्हें शेयर नहीं दिए थे, बिकॉज अगर हम उनको राइट शेयर्स देते तो फिर फेरा का जो लिमिट था वो एक्सीड हो जाता। तो इन दिस सिचुएशन इट इज नॉट ऑपरेशन। या फिर एक इंसान ने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस लॉस होना, इंक्रीज करना कैपिटल जब फंड्स की जरूरत है, इट इज नॉट ऑपरेशन। डिविडेंड डिक्लेयर ना करना, सामने वाले शेयर होल्डर के ऊपर स्यूट करना बिकॉज वो पेमेंट नहीं करता, ये सारी चीजें ऑपरेसिव नहीं है। सो ये ऑपरेसिव है, ये ऑपरेसिव नहीं है। Again, I am saying this is just a small illustrative list. You cannot take this as a base always to decide that yes, this are the only examples. And friends, actually speaking, many times it is very difficult to bifurcate that what is operation and what is mismanagement. But hereby trying to bring a brief analysis of operation and mismanagement. Mismanagement में आपको खास करके एक चीज प्रूव करनी है, एक छोटा सा foolish decision कभी मिसमैनेजमेंट नहीं कहलाता। मिसमैनेजमेंट के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस एक्ट है, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस, छोटी मोटी गलती नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कंपनी के पूरे अस्तित्व को, कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को हिला के रख सकती है। जैसे कि वी से डेडलॉक इन मैनेजमेंट, इट्स अ प्रूफ ऑफ मिसमैनेजमेंट। व्हाट आई मीन बाय डेडलॉक, हमने वाइंडिंग अप में देखा था कि कंपनी के अंदर दो ग्रुप्स हो चुके डायरेक्टर्स के, एक ग्रुप जब हाँ कहता है तो दूसरा ग्रुप भले कंपनी के हित में हाँ हो, पर सामने वाला ग्रुप ना कह रहा है इसलिए वो भी ना कहे। ऐसा डेडलॉक हो जाए, कंपनी के अंदर कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस मिसमैनेजमेंट होगा, तो यू कैन प्रेफर एन अपील टू ट्रिब्यूनल। कौन-कौन सी चीजें मिसमैनेजमेंट की होती है? कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि आने वाले सुनहरे भविष्य के कोई बोनाफाइड रीजन के लिए हम प्रॉफिट्स रिजर्व में रख सकते हैं और डिविडेंड नहीं दें, ये थोड़ी मिसमैनेजमेंट होता है। या फिर कोई जेन्युइन रीजन से एसेट्स का बराबर से यूज नहीं हो पाया, या कंपनी वाज इन अ वेरी क्रिटिकल फाइनेंशियल सिचुएशन एंड इन दैट डायरेक्टर्स मेड अ काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट वेयर दे इश्यूड शेयर्स टू द क्रेडिटर्स एंड बिकॉज़ ऑफ दैट द क्रेडिटर्स बिकम शेयर होल्डर। नाउ देयर वाज अ नीड ऑफ अ कंपनी, इट इज नॉट अ मिसमैनेजमेंट। या फिर कुछ डायरेक्टर को रिमूव किया और बाद में नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया, अरे यार जेन्युइन रीजन थे। तो ऐसी सारी सिचुएशंस को अगर आप मिसमैनेजमेंट का नाम दे देते तो वो भी कोई सही चीज। तो फ्रेंड्स, जब भी मेंबर या मेंबर्स ट्रिब्यूनल को अप्लाई करते हैं कि भाई कंपनी के अंदर ऑपरेशन है, कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट है, तो तब उन्हें सच में चेक करना चाहिए कि क्या सच में
ऑपरेशंस है या नहीं, या सच में मिसमैनेजमेंट है या खाली अनप्रोडक्टिव एप्लीकेशंस करनी चाहिए. Friends, now after discussing what is operation, what is mismanagement, which are the situations which lead to operation and mismanagement, now we are discussing that whenever in a company operation or mismanagement is found, certain people are eligible to make an application to tribunal. Tribunal मानते NCLT. कौन अप्लाई कर सकता है इनसे? तो दो प्रकार के नियम होंगे. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इन पब्लिक इंटरेस्ट, एंड दूसरा कौन अप्लाई कर सकता है? या तो एक या तो अनेक मेंबर्स बाय फॉर्मूला ग्रुप इवन दो दे आर इन माइनॉरिटी टू ट्रिब्यूनल. नाउ इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है. इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हो उस मेंबर्स के 1/5 ढूंढो, एंड वो जो आ रहा है राइट उतने लोग अप्लाई करने चाहिए मिनिमम. एंड अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल वाली है तो 100 मेंबर्स, या तो टोटल अमाउंट मेंबर्स के 1/10, या तो फिर ऐसे मेंबर या मेंबर्स जिनके पास मिनिमम 1/10 इश्यूड कैपिटल, उनमें से कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में. हालांकि तो और है, पर अगर खाली समझने के लिए लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो. अगर अंडरस्टैंडिंग नॉट अ रूल whichever is, बाकी अगर आप ऐसा ना करो तो भी एब्सोल्युटली चलता है. प्लस एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है. ट्रिब्यूनल may waive off this requirement. यानी ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसे अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है. जिससे ट्रिब्यूनल क्या करता है, अगर कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो एक भी इंसान अप्लाई करे तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा, बिकॉज योर who has applied is not important, but yes, if something wrong is going on in the company, then to curb that, to stop that, to catch the person who are in the ultimate control of the company, that is much more important. So in this situation, even a tribunal may waive off this requirement. ऐसे ही दूसरा पेपर कब दे सकता है, तो लॉ ये कहता है कि जो इंसान ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर रहा है, जो मेंबर, उसको कंपनी को जो कॉल मनी के पैसे देने हैं वो देंगे, और उसकी साइड से कंपनी के कोई पैसे आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए. पर अगर किसी ने कॉल मनी ना भरा तो वो भी अगर चाहे तो अप्लाई तो कर ही सकता है, बिकॉज यहाँ पे पैसों का सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. सो इस प्रकार से नंबर ऑफ मेंबर्स टू अप्लाई. ध्यान रखना जब भी आप ये एप्लीकेशन करते हो, इट शुड बी इन फॉर्म NCLT 1. It should be in form NCLT 1. And the situations are under section 241, subsection 1A, या subsection जो इसके बाद किस है. And एक बार अगर मेंबर या मेंबर्स अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद अगर कोई भी रीजन से वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो लोग अपनी एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल के परमिशन के बिना विड्रॉ नहीं कर सकते. एंड to take permission for withdrawal of application, apply in form NCLT. क्यों ये प्रोविजन रखा? बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि चाहे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने ऑपरेसिव या मिसमैनेजमेंट के खिलाफ एप्लीकेशन कर दी और फिर मेजॉरिटी लोगों ने धमकाया और वो एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहे, तो अब ट्रिब्यूनल बिना उनको पूछे कभी एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं करेगा. प्लस कुछ खास विशेष बातें
कि जो ये हमें रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स या ये जो कंसेंट चाहिए या जो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग चाहिए वो सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम चाहिए। अर्थात एप्लीकेशन हो जाने के बाद अगर कुछ लोगों ने अपने शेयर्स बेच किए और उसके कारण शेयर होल्डिंग कम हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर कैपिटल कम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज चेक्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन। अगर कुछ लोग ने एप्लीकेशन कर था और बाद में उन्होंने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर दिया, no need to worry, this kind of withdrawal of consent will not at all affect the maintainability of the seal. हाँ, ऐसा भी हो सकता है ट्रिब्यूनल का एप्लीकेशन सिर्फ एक या चंद मेंबर्स ने किया था on behalf of all, चले, because others have authorized those particular members. मैं तो ये कहता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी यहाँ गिने जाता है। अगर शेयर्स डीमेट फॉर्म में हो, राइट, तो फिर ये डिपॉजिटरी नहीं बेनिफिशियल होल्डर अपनी कर सकते हैं, बिकॉज दो डिपॉजिटरी इज अ रजिस्टर्ड होल्डर, मेंबर्स आर बेनिफिशियल। प्लस अगर गलती से किसी का नाम निकाला गया था रजिस्टर ऑफ मेंबर में से, फिर बाद में वो कोर्ट में से डिक्री भी लिया कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन करो, और अभी तक रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, यानी उसका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आया, पर उसके पास डिक्री है रेक्टिफिकेशन, तो नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में ना होने के बावजूद वो एप्लीकेशन किसी इंसान की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एप्लीकेशन कर सकता है। ज्वाइंट होल्डर्स तो उन्हें नंबर ऑफ मेंबर्स कैलकुलेट करते वक्त एक बना जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ ब्रीफ एनालिसिस लगभग कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट व्हाट शुड बी टेकन केयर व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड एंड व्हेन द एप्लीकेशन इज एलिजिबल एंड व्हिच आर द सिचुएशंस। So friend, kindly take the note of this. This will help you to solve the various practicals may be asked at CA level or TC's fashion. Now friends, let me discuss with you one of the practical which can help you to understand the conditions of section 244 regarding the maintainability of the suit, that number of members, share capital and everything. This will help us to have a conceptual clarity on the particular topic. For example, in a company in Navkar Limited, the issued, subscribed and paid up capital was the same. The shareholding pattern of the company was two types of shares: equity share, preference share, capital 9 lakh, 1 lakh, 10 lakh, 90,000 shares, 10,000, total number of members 5,600. कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन के ट्रिब्यूनल में टोटल 450 मेंबर्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 400 प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, 50 इक्विटी शेयर होल्डर थे। उनके पास शेयर होल्डिंग 5,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, टोटल 9,000। हमें डिसाइड करना है कि क्या ये एप्लीकेशन एलिजिबल थी कि नहीं थी। तो उसके लिए एक तो हमें चेक करना होगा ए 100 मेंबर्स या 400। दूसरा 10% ऑफ टोटल मेंबर्स। ये तीनों में से जो कम हो, जैसे कि देख सकते हो, हमें मेंबर्स के पास कितना शेयर हो, तो 9,000, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। एंड आप कह सकते हो कि 100 मेंबर्स, उसके सामने 450 ने अप्लाई किया, so that we can say that as the application made by 450 members meet the eligibility criteria under section 399 and therefore the application is maintained. तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। उसमें खास फोकस क्या करना चाहिए, ये कंपनी का शेयर होल्डिंग करना है, ये एप्लीकेंट्स, उसमें कभी गलती होनी चाहिए। Yes friends, now as we saw the very first, what is operation, what is mismanagement, if think such a kind of situation exists in a company. In second part we saw that who are eligible, and in situations they are eligible to make an application to tribunal in form NCLT 1. Think of that the situations of operation mismanagement are attractive and the eligible applicants also make an application. Now it's a turn of tribunal. Tribunal to consider application in
following two cases. The very first case is affairs conduct and second is material change. यानी अगर सामने वाला एप्लीकेंट प्रूव करे कि कंपनी जिस तरीके से अपने काम क्रिया को संभाल रही है वो डेट्रिमेंट नुकसानकारक है, हानिकारक है, या तो जनहित या तो कंपनी के या तो मेंबर्स के, या फिर सामने वाले एप्लीकेंट ऐसा प्रूव करते हैं कि कंपनी के अंदर इतना सिग्निफिकेंट, इतना मटीरियल चेंज आया है जिसके कारण ये चेंज हानिकारक हो सकता है या तो जनहित को या तो कंपनीज के या तो क्रेडिटर या तो मेंबर्स के। अगर ये प्रूव हो रहा हो तो एप्लीकेशन एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मटीरियल चेंज कब आ सकता है। तो अगर किसी मेंबर्स के एक्शन के कारण अगर क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स या क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के अधिकार में चेंज आया तो दैट इज नॉट मटीरियल चेंज। मटीरियल चेंज तब आता है जब कोई भी तरीके से मैनेजमेंट में चेंज। आप जानते हो मैनेजमेंट में सबसे सुप्रीम, अगर कंपनी के अंदर एमडी ना हो तो मैनेजर होता है, और अगर कंपनी के अंदर मैनेजर हो एमडी हो तो एमडी होता है। व्हाई? बिकॉज इन वन कंपनी एमडी एंड मैनेजर कैन नॉट बी टुगेदर। तो अगर मैनेजर में कोई चेंज या ओनरशिप में चेंज, ओनरशिप में कैसे चेंज हो सकता है? तो कंपनी विद शेयर कैपिटल, यस, तो चेंज इन शेयर्स, कंपनी विद शेयर कैपिटल, नो, तो चेंज इन मेंबरशिप। ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा तो ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट। यस फ्रेंड्स, द लास्ट पार्ट to as such conclude, because after this section 245 will be there, which is a kind of a small difference. Here we are thinking of a collective action, there we move towards a class action. Otherwise the logical and the conceptual and the legal part is one and the same. The last part is what about if tribunal takes an action. Then we need to think that जब भी एप्लीकेशन की गई थी क्या ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? फ्रेंड्स, आप जानते हो मैंने बताया था नॉट डिफाइंड इन है, बट जब आप एक ब्रॉड जेनरिक सेंस में सोचते हो, आप अपने आप को एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, तो आपको बेशक पता चलेगा तो क्या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट था? हाँ, ओके। क्या ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन की गई थी? हाँ, पर एक सेकंड, एलिजिबल लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। एलिजिबल वाज सेक्शन 244। अगर एलिजिबल लोगों के द्वारा एप्लीकेशन की गई थी तो क्या ट्रिब्यूनल डीम्स फिट? आप लोग कैसे डिसाइड होता है? तो वी नो सेक्शन 241 1A और हाँ वो भी था, तो फिर बेशक ट्रिब्यूनल एक्शन लेगा बाय पासिंग लॉ। एंड फ्रेंड्स, ये चीज को आपको बेशक याद रखना चाहिए कि इट इज नॉट सो दैट ट्रिब्यूनल हैज ओनली द पावर टू पास द फाइनल ऑर्डर, बट ट्रिब्यूनल हैज द पावर इवन टू पास interim order if before passing the final order it needs to go for some kind of legal proceedings, because action जितनी पास की जाए उतना अच्छा, वरना डैमेज बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड फिर उसे क्योर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लग रहा हो कि अभी जो रेमेडी आ रही है वो शॉर्ट टर्म, भविष्य में वापस से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल यहाँ तक ऑर्डर पास कर सकता है, वो यहाँ तक कंपनी के दो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में भी बदलाव ला सकता है। इतना ही नहीं, वो ऐसा भी कह सकता है कि अब आने वाले भविष्य में जब भी कंपनी अपने ये दो डॉक्यूमेंट्स में बदलाव लाना चाहे तो वो ट्रिब्यूनल को कॉपी दे या ट्रिब्यूनल की परमिशन ले, ट्रिब्यूनल की, इन शॉर्ट वो अभी जो डैमेज हुआ उससे तो क्योर करेगी और आने वाले डैमेज के लिए एक प्रिकॉशन, एक प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकती है। ट्रिब्यूनल कोई भी प्रकार का ऑर्डर पास करे, उस ऑर्डर की कॉपी 30 डेज के अंदर कंपनी को आरओसी को देनी पड़ेगी, अदरवाइज कंपनी इज लायबल फॉर द पेनल्टी। एंड इसके अलावा कौन कौन से ऑर्डर्स आरओसी पास, ट्रिब्यूनल पास कर सकता है?
तो रिमेंबर एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट में आपको बताया, अदरवाइज ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है विच ट्रिब्यूनल्स डीम्स। एनी ऑर्डर आप जब भी देखोगे तो ऑर्डर क्या कंट्रोल करता होगा, तो या तो वो कंडक्ट ऑफ अफेयर्स को कंट्रोल करता होगा, सेक्शन 241(1)(a), या तो अगर मटीरियल चेंज का प्रॉब्लम होगा तो मटीरियल चेंज को नियंत्रण में, यानी कोई भी प्रकार का ऑर्डर होगा उसका फोकस जो होगा वो या तो अफेयर्स की कंडक्ट को रेगुलेट करने का होगा, मेन या तो फिर वो हुए मटीरियल चेंज को कंट्रोल करना और भविष्य में ये ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए क्या हो सकता है। फर्स्ट, अगर वो शेयर होल्डिंग में इंटरचेंज किसी ने ट्रांसफर किया और जिसमें से माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग मेजॉरिटी हो गया और मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो गया, तो ट्रिब्यूनल में पास करना कि ये मेंबर को अपने शेयर बेचने होंगे और उन मेंबर को खरीदने। सो ट्रिब्यूनल इंटर से मेंबर्स के बीच में शेयर्स जिससे इंटरनल शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज। या कई बार ट्रिब्यूनल ऐसा भी कह सकता है कि चलो भाई कंपनी तुम ही इतने शेयर परचेज करो, ओ कंपल्सरी कैपिटल इंजेक्शन। या अगर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर एंड कंपनी के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो उसे ट्रिब्यूनल चेंज कर सकता है। कैसे? पूरा कैंसिल वापस से कर दे, स्टॉप कर दे या मॉडिफाई कर। एंड ऐसा एक्शन जब लिया जाता है तो उस डायरेक्टर ने जो गलती की है, जो इस डायरेक्टर उसको ऑफिस छोड़ना, उसे इस ऑफिस छोड़ने के लिए, लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ऊपर से वो आने वाले 5 साल के लिए कोई भी दूसरी कंपनी में सिमिलर पोजीशन होल्ड नहीं करेगा और इसका अगर उसने उल्लंघन किया तो उसे पनिशमेंट दी। अरे कंपनी का मैनेजमेंट के साथ नहीं, अगर किसी भी और इंसान के साथ कोई प्रकार का एग्रीमेंट हो तो उसे भी क्या कर सकती है, सेट असाइड, टर्मिनेट या मॉडिफाई, अगर वो ऑपरेसिव या मिसमैनेजमेंट इन नेचर। अगर कंपनी ने किसी के पास से कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हो जो खराब, जैसे कोई गुड्स खरीदी हो, गुड्स बेची हो, सर्विसेज ली हो, सर्विसेज दी हो, पेमेंट किया हो, लोन ली हो, कोई भी चीज जो प्रेजुडिशियल हो एंड वो पिछले 3 महीने में की गई तो उसे भी सेट असाइड किया। मिसमैनेजमेंट जब हो तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, कुछ डायरेक्टर को निकाल सकता है। ट्रिब्यूनल अगर निकालना चाहे तो अपने कुछ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, जिनको निकाला वो वापस ना जाए तो अब से सब्सिक्वेंटली किस तरीके से डायरेक्टर्स को मैनेज किया जाए उसके भी नियम को बता सकता है। अगर इस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के द्वारा अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है, अनड्यू गेन किया है, तो उनके पास से रिकवर करने का ऑर्डर भी पास कर सकता है। एंड उनके ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के कारण कंपनी को जो खर्चा हो, नुकसान हो, अपॉर्चुनिटी लॉस हो, वो भी रिकवर करने के लिए ट्रिब्यूनल कह सकता है। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये तो सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल जो करना चाहे वो ट्रिब्यूनल कर सकता है। ट्रिब्यूनल का अल्टीमेट उद्देश्य हो कि जो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट कंडक्ट ऑफ अफेयर्स में हो उसे नियंत्रित करे, जो मटीरियल चेंज लाके उन्होंने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट किया उसे कंट्रोल करे, ना ही उसे अभी कंट्रोल करे पर ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी लिए जाए जिससे भविष्य में ये कभी रिपीट ना हो। एंड ये सब कुछ किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, क्योंकि ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ था, क्योंकि कुछ एलिजिबल लोगों ने अप्लाई किया था, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑपरेशन है मिसमैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स काइंडली टेक नोट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एज इट इज गिवन। So friends, after the discussion of section 243 and 244 and also 242, now the last section pending is 245, which is regarding if the members are available with the rights. Also the class of members or deposit holders are also available with the rights when section 241 grounds are met. The procedure is same. The procedure is the same. Also the concept is same. So that's the reason we are not discussing that, which is to be read by you on your own. But the right is also available to the members and depositors of certain class under section 245.
Remember, any order passed by a tribunal shall be binding on company and all its members, depositors and auditors, including the auditing firm or expert or consultant or advisor or any other person associated with the company. Friends, you should also note down that when an application filed before the tribunal is found to be frivolous or vexatious, बहुत छोटे अमाउंट के लिए आप एकदम fabricated, गलत है, तो tribunal may reject the application and make an order that the applicant shall pay to the opposite party, manhani, such cost not exceeding rupees 1 lakh as the tribunal may deem fit. The tribunal shall record in writing the reasons on the basis of which it found that the application was frivolous or vexatious. Remember friends, nothing of this section 245 shall be applicable to banking. And the last section in the series of section 241 to 245 is section 246. And they say that the provisions contained in section 337 to 341, both inclusive, shall apply mutatis mutandis in relation to application made to tribunal under section 241 to 245. So friends, this is something as far as the newly amended chapter of operation and mismanagement is. Friends, you shall note down and you should remember that this video lectures by amendment will be very fruitful to you when you are learning for the May 2017 examinations. Friends, at this juncture I would like to share that Navkar got the first rank in CPD in December 16 with 193 marks. There are 3 students who secured more than 190 and 17 students who secured more than 190. Our passing is almost double than the national result. It is the only institute across nation which provides video lectures of full syllabus of CPD as you are seeing right now on fine. Taking 160 exams including 30 full test prelims, we are getting the highest result in the topmost rank in all levels of CA, not only CA but also CS. For us, one student is one family. It is the only institute which is student-centric and works for the result of students. To create a better base, a good base for a student who joins the commerce field for CA, we are also in a school which is providing 11th and 12th commerce named Navkar Institute. So friends, as you have got the benefit of Navkar Institute which believes in the best, you also believe that if you can recommend others for their future shaping, for their future benefits. Friends, before we end up with this video lectures, let me clarify that in this video lecture series, we discussed company law. In that, we discussed in that 2 chapters, merger amalgamation, winding up. Though it was of 1956, we still discussed because they were pending in the classroom discussions because I was expecting change, but it didn't came. Later on it came, but not applicable for the May 2017 exam. We discussed in that the 2 new chapters of operation mismanagement, NCLT, NCLT and special codes. Friends, as far as the allied law is concerned, we discussed the amendments in SEBI, FEMA, insurance though not amended, still discussed the important provisions and this approach. We have an overview of various miscellaneous amendments. Apart from the amendments discussed in operation mismanagement, NCLT, NCLT and special codes, there are certain amendments which are self-explanatory in nature, which are provided to you in the material and which are very simple because they are also common with the audit. So I will not discuss that in the video lectures, which are related to the chapter of declaration and payment of dividend, in which section 124 and 125 become notified. There is also a change in the chapter of accounts and audit, various miscellaneous revisionary powers, but as they are also thoroughly discussed in audit, we have not discussed those in the amendment lecture. There is also a change in the appointment and managerial remuneration chapter, but the change is very simple. The limits which were given in schedule 5 part 2 regarding the effective capital are almost kind of level and only that is revised. So we have not discussed that because it is a factual amendment, does not require any kind of explanation. There are also few minor amendments as far as the meaning of board powers, again self-explanatory, not discussed. Oh yeah. Also there were new sections notified in the chapter of inspection, inquiry and investigation. All those sections along with a brief revision we have also discussed. I forgot. Success, a great future
come ahead. Thanks to Navkar Institute, to Hitesh sir for reposing faith in me, trusting me. A big thank to all of you, the video viewers, friends, students of Navkarites, also the outside students who are taking the benefit of this. I tried my level best to provide you the best, to the best of my knowledge. But in case some of the discrepancies or mistakes, kindly ignore the same and bring to our notice also. This was a very small effort. It might be possible that certain concepts might not be discussed in depth, but always remember, video lectures are not a substitute to the classroom teaching. Classroom teaching is much more exhaustive, elaborative, illustrative, covering various practical approaches. The main reason behind not discussing the practical approach in classes, practical approach is much more different than the theoretical approach. Many times practical approach may be, per se, illegal. So whenever I discuss something practical in class, that teaching is not included here in the video lectures to maintain the decorum of the institute. Friends, moreover, I believe that whatever reference material you are using, whenever you are reading any of the law, read it thoroughly with the help of examples. No need to cram up, but yeah, you need to remember the legal words which appear in the law. Friends, last but not the least, whichever reference book you read, first read all those notes which we prepared in the class, those classroom charts, those memory techniques. Then you read from any reference material you want. May it be the ICI study material or may it be any reference book of the renowned author or the material provided by any of the coaching institute, Navkar Institute. And lastly, don't forget to refer the practice manual of the ICA. Friends, wish you best of luck. Be positive, be theoretical, be conceptual. God bless you.